चलें तो मैं एक सेकंड में फिर मैं फार्मली उसामा तारिक भाई को इंट्रोड्यूस करता हूँ. तो ही इज द सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ही इज द ब्रेन बिहाइंड इट along with इरफान भाई who is the co-founder of ETL Online. बहुत सारे घंटे, पता नहीं हजारों घंटे लग चुके होंगे उसामा तारिक के, इरफान भाई के और उसामा की टीम के. और एक बहुत बड़ा इन्होंने गिफ्ट दिया पाकिस्तान को. और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये गिफ्ट अच्छे तरीके से इस्तेमाल होगा यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि जो 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के, वो हैं स्टूडेंट, फैकल्टी एंड देन एडवाइजरी फ्रॉम द इंडस्ट्री. अगर वो तीनों इकट्ठे किसी एक प्लेटफॉर्म पे आके मिल के काम करें, उससे कोलेब्रेशन अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है. और through the guidance of advisory of the industry, students can learn a lot, and they can work on the success of their successful start of their wonderful career, inshallah. So with that, Sama bhai, you can start and introduce more on the from the technical side, the architect. Maybe you start with high level functions just briefly, and then what is the foundational architecture, and then inshallah, folks who are on the call, both सारे sessions will be followed up with that, ताकि हम आपको एक तरह से हैंड होल्ड करके आपको बताएं कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं स्पार्क प्लेटफॉर्म पे. क्योंकि हमने काफ़ी सारी इंशाल्लाह चीज़ें बनानी है, इन्हांस करनी है, ऐड करनी है टू दिस प्लेटफॉर्म, ताकि ये बड़े अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से यूज़ हो सके इंशाल्लाह. So over to you, Sama bhai. Thank you, Tariq. I hope I'm audible. अच्छा जी. जी मेरा जी. नाम मेरा नाम उसामा तारिक है. I am very small part of ETL and Spark, and one of the administrators from the Spark open source project. That was just my introduction. Let's go to the Spark. So I've shared the link इसी meeting के अंदर, ETL Online / Spark within the GitHub. This is the project that we have. I'll just explain a little bit about the vision of the Spark and what's in it. So, being an open source community platform, bridging the students, mentors, industry, and faculty, because what the problems we are trying to solve is lack of structured collaboration. बहुत सारे लोग जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, इंडस्ट्री है, फैकल्टी है, उनकी collaboration के बहुत सारे issues हैं पाकिस्तान में. So this is one of the platform that's trying to resolve those collaboration issues. And I'll get to in a second how and why. But let's get to the next point, which is finding the projects to contribute. This is a real world scenario, real world problem. आप जैसे, आप भी, मैं भी, हम अक्सर ढूंढते हैं कि वे कैन आई कंट्रीब्यूट. यहाँ पे तो कोई पाकिस्तान में तो कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं ओपन सोर्स, तो कहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, कहाँ पर अपना नाम बनाएं. So this is a project where you can actually contribute, try to refine, try to progress the mission of this open source community. And you can also see this is not just me. There are several other contributors that are refining the process or हर चीज़ issues और हम internally भी और within GitHub issues के अंदर भी इसको resolve कर रहे हैं. So just to let you know that this is the recognition that you will get to actually contribute within the Spark project. Or inshallah, when we are going to launch this process even further, the contribution is going to get a lot more better. Lekin just to let me show you, the more you contribute, um, the GitHub will actually reward you in terms of badges and also recognition. And you can also show the industry that you have a pretty renowned uh, recognition uh, within not just one project, which is actually alive and working. So just on that point, let me actually go to this project here, spark.etlonline.org. This is the real deal. So we are live, although we may experience some issues, but for the daily use, I hope we are tackling them all. So therefore, we need contributions. We need problem solvers that can take this project to future generations.
not just us. So not just is providing a solution to collaborate, it's also providing opportunity to contribute. So next thing, which I think already covered, which is the recognition networking within the platform. So it's not just that you're providing a solution and you're recognizable within the GitHub or in the industry, but you can also connect with people. You can search people based on some interests and skills, whatever you're trying to add, whatever your interests are. You can try to post. You can add pretty much anything. So this has been live pretty much just this Sunday, uh, barely hours ago. But still, as long as we are here, you can actually see other people's profile. You can actually connect with them. You can do a chat with them, and actually, and also the communities which are not really present, but this is something that we are going to add um, incrementally so that everyone can collaborate within the spaces, do chats, do connections within the industry, and also with faculty, and also manage the projects for them. So right now, just taking to you to a detour, sort of, but this is one of the examples that we're doing. This is the development purpose build only. But here I can actually show you a little bit more. But let's just not let's talk about the platform walkthrough first. So अभी जो हमारे पास profiles, personas, हमारे पास कवर हो चुके हैं, चैनल स्पेसेस बन चुकी हैं, और उसके अंदर हमारे पास कंट्रीब्यूशंस, रोड मैप्स और गिटहब इंटीग्रेशंस अभी नहीं हुई है, but you can actually do really profound recognition. So अगर मैं specifically अगर किसी collaboration की बात करूँ तो एक प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है कि हम प्रोजेक्ट में किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे, या हम इश्यूज कैसे देखेंगे, और या फिर कोई इंडस्ट्री है जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रही है, आप उस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बन सकते हैं, उस कम्युनिटी के अंदर प्रोजेक्ट्स कैसे मैनेज कर सकते हैं. So this is something how you can do. You can actually look at the tasks, do certain things within your team. You can manage backlogs, sprints, and teams. And also, not just that, if I go into the spaces, you can also see that we have multiple features within the space. Like you can chat with your team, you can do posts and file sharings, and you can also do a project management as well, right within one space. So you don't need to go anywhere else. That's a very really tight integration within the platform. ये काम जो है बाकी सारे दूसरे प्लेटफॉर्म भी करते होंगे, लेकिन उनके दरमियान में एक कोहेरेंस मौजूद नहीं है. तो दिस इज समथिंग दैट really going to drive this project forward inshallah. रोड मैप्स और अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च हो चुका है. फ्यूचर रोल आउट जो सी हैं वो प्लान हो रही हैं, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू लॉन्च द road maps, not only on the GitHub, but also we are planning to do the road maps right within the website so that everyone can be more can monitor the progress, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आगे आनी हैं, क्या क्या चीज़ों के अंदर आप पार्ट कर सकते हैं, not only just with the code but also maybe realistically you're part of some design team or some maybe another team not related to the code as well. So you can build your own communities right within this part. If we go forward, how you can get involved, you can actually go through the code. Pretty much documentation of the platform is self-explanatory. If you have any issues, open up any discussion points. You can chat with us here, or contributors or admins. We'll try to solve your problems. यहाँ पर आप polls create करें, ideas दें, general communications यहाँ पर आप create कर सकते हैं. Let me actually try and do first poll, maybe
would you like to contribute? And you can do all sort of things here. It's just not necessary discussions or code. You can actually help us refine the designs a little bit. If you have a design experience, you can also participate with that. And also, if you have managerial experiences, you can also participate within managing the GitHub roadmap and also um, managing all of the issues and also a lot of these problems that are mainly not technical as well. Um, and also, let's do first poll first. Um, let's do this here. That's really a bit of a, let's say, conversation starters. But we'll experiment with all of these things. लेकिन अभी जो हम यहाँ पर polls या discussions जो भी करेंगे, that will be basically um, within this part, within the ETL organization. But would very much like everyone to participate, not only just with the code, but with any conversations, question and answering, or any announcements or anything else. So इसके अलावा जो है आप हमें कहाँ कहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, I guess, और channels are pretty much clear. You can participate or question here. You can also create issues if you're really like to dig deep into the solutions as well. You can also provide details. So for example, if I say there's some issue or some ticket that you actually like to refine, add some concepts. Okay, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है. For example, you also like to link up some examples. You can also do that here. तो यहाँ पर sort of जिस तरह यहाँ पर अक्सर हमारे अभी इंटरनली लोग भी टीम के मेंबर्स सारे इश्यूज के ऊपर कमेंट करते हैं, वी कैन एक्चुअली प्रोसीड विद इट. और अगर कोई कन्वर्सेशन है या फिर कोई सोल्यूशन है, वी कैन एक्चुअली क्रिएट पुल रिक्वेस्ट. And you can also already see, and there are a lot of these pull requests that we actually need to review and then merge up. So you can also try and contribute this way. और यहाँ पर आप हमें बता सकते हैं कि if something works for you, if not, how can we actually make it even better. There are plenty of details within the pull request as well. There are linked Jira tickets right now, but don't worry, this whole detail will also be shared within the tickets so that everyone is aware. It's just not only Jira context. So I think this provides very good example of how we can actually document within the pull request as well. और यहाँ पर review क्या code change हुआ, वो भी आप देख सकते हैं. It's actually really nice that we can actually view at all of this stuff, and you don't really need to be part of the community because it's open. Sorry, not part of the actual organization. You can actually fork this project. You can use it on your own. You can uh, create your own cool stuff, but also solve the actual problem that the main fork have. इसके अलावा I will just really quickly go through some of the project structure points. If you're just to maybe point out, यहाँ पर हमारे पास main readme के अंदर तमाम setup files मौजूद हैं. So if you really like to get into the nitty-gritty, you can uh, fork it, install the dependencies, set up some things that are prerequisite, for example, Postgres database and whatnot. Everything else is pretty much easy to source and easy to actually set up. We also have a process where you can actually create an issue. We will do another session where we actually resolve a problem live, और उसके अंदर हम issues भी pick करेंगे, and we'll go through the process कि हम कैसे उसको end to end commit करते हैं, push करते हैं, and then review process कैसा नज़र आता है and how it actually gets live into some environment. यहाँ पर QA team और बाकी सब इसको test कर सकते हैं.
Onwards to the project structure. So this is really something that I added just today, uh, because we were trying to do asynchronous communication as well, जहाँ पर हमें हर चीज़ के लिए सेशन ना करना पड़े, but there will be some concrete document about what is the platform और कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें पड़ी हैं. So basically, this project is a next year's project. If you have already guessed, but यहाँ पर हमारे पास GitHub directories हैं for CI CD integrations, जहाँ पर हमारे पास continuous integration continuous deployment साथ साथ चल रही है. So there's not really I guess problems on that, but we also have some precautions with on how and what to be pushed और क्या commit हो सकता है. उसके अलावा हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है जिसमें हम तमाम पब्लिक चीज़ें पुश करते हैं. उसके अलावा सोर्स इज़ द मेन डायरेक्टरी जहाँ पर सारा कोड पड़ा हुआ है, एंड दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स दैट यू कैन फाइंड. और इसके अलावा इस सोर्स की डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कुछ क्लियर सिंपल आर्किटेक्चर और जिसके अंदर हम कहते हैं कि बेसिकली एटमाइज्ड या एटम बेस्ड वर्कफ्लोज हैं. इसमें डिज़ाइंस, फाइल्स, मैनेजमेंट, कॉन्फ़िगरेशंस, लेआउट्स, सब कुछ बेसिकली ग्रैनुलर लेवल पर पड़ा हुआ है और अंडरस्टैंडिंग में भी आसानी है. तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 मेन राउट ग्रुप्स हैं जिसके अंदर कुछ सुपर एडमिन की यूटिलिटीज़ हैं, कुछ मेन डैशबोर्ड्स हैं जिसके अंदर बाकी सारी ऐप ऑपरेट करती है और ऑथेंटिकेशन के फ्लोज हैं. You can also find maybe a bit more around how they are looking, और उसका हम शायद एक एडवांस्ड सेशन अगर आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो ज़रूर करेंगे, बट आई थिंक इट मे बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इफ यू हैव maybe some experience with React as well. इसके अलावा हमारे पास तमाम लेआउट्स और ग्लोबल CSS एक ही जगह पर पड़ी है ताकि ताकि कुछ भी हमें चेंज करना पड़े, we'll just pretty much do change in one place and every other place in the platform will adapt. इसी तरह हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर तमाम चीज़ें हैं, that is under the same one folder, that is /db. You'll be you don't need to create your own database and stuff. If you have a database, it will actually create the with the help of migrations. You can actually create your database with the schemas, and we have a clear distinction on how and when and where you can actually write queries, and you can actually where there's no actually there are separation of concern where we actually motivate कि हमारे पास सिंपल स्ट्रक्चर हो और जो भी कोड हो एक जैसा हो ताकि न्यू अडॉप्शन के लिए बड़ी आसानी हो चीज़ों को लर्न करने में और जल्दी अडेप्ट हो जाए. इसी तरह से हमारे पास बुक्स, बेसिक रिएक्ट कंपोनेंट्स और बाकी सारी चीज़ें वो भी सेपरेटेड हैं. यू कैन ऑल्सो गो थ्रू अ लॉट ऑफ दीज सर्विसेज एंड सर्वर एक्शंस जो कि हमारे पास क्लियर कंसाइज फोल्डर्स के अंदर पड़ी हुई है जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये कौन सी चीज़ है या किस चीज़ की सर्विस है. यू कैन गेट थ्रू अ लॉट ऑफ दीज रियली क्विकली इफ यू अंडरस्टैंड बेसिक रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स. इसके अलावा तो हमारे उसामा पास भाई, हम लोग एक थोड़ा सा पास टाइम पूछें कि अगर किसी के क्वेश्चन है. जी जी Anybody has any question? I see one question from Safiullah. Same as GitHub, like collaboration on code and send requests of reviewing the code and merge requests into actual code. So बिल्कुल ऐसे ही है. I guess the collaboration part is never changing. It's same as how you do pretty much any repository in the GitHub, if that's your question. So यहाँ पर हमारे पास सारी collaborations वगैरह सारे tools GitHub की तरह ही हैं. If you're talking about the platform itself, Spark, तो उसका कोड से लेना देना कोई नहीं है. It's all about collaboration, not just on the code, but any actual topic or product or anything else. वो वहाँ बेसिकली कोलैबोरेशन है कि जो FIPA बनाना कैसे है.
उसके एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उस हवाले से जो भी कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन चाहिए कि भाई अच्छा आर्किटेक्चर बनाना है, उसके हवाले से अगर कोई आपस में चैट चल रही है, कोई पोस्ट चल रही है या कोई फाइल शेयरिंग चल रही है, तो स्पार्क पे आप आके स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं, फैकल्टी देख सकेगी, एडवाइजर्स देख सकेंगे। तो वो कोलेब्रेशन फॉर बिल्डिंग द प्रोजेक्ट, फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, वो स्पार्क है। बिल्कुल ऐसे ही सो लेट मी एक्चुअली ब्रिंग यू टू द प्लेटफॉर्म एज वेल। यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं एज यू लाइक, और चैनल्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। देयर आर मेन टॉपिक्स यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यू कैन एक्चुअली क्रिएट several topics here and also channels for which you want to actually talk about, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। The actual space that we're talking about is something that will hold all of the features together. So basically, let me take you to one example. Let's see this one. So here we actually do an example of an FYP project. तो यहाँ पर आप बेसिकली देख सकते हैं कि तमाम जो अगर प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर उसकी एक सेपरेट स्पेस है आपको मिली हुई, उसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो रीड मी सॉर्ट ऑफ वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। फाइल शेयर्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स एंड पोस्ट विद इन द टीम आर ऑल देयर। आपने अगर किसी के साथ बात करनी है विद इन योर टीम, यू कैन ऑल्सो डू दैट हियर। File sharing, oh sorry, I already I think covered it. But for the project management, you can create your own project. You can do your sprints with the community and with with your mentors or with your faculty members. यहाँ पर basically आपको you don't need to restrict really. This is not walled by the paid process. You can actually just right away use it. If you're industry, or you can actually try and request the community as well for your topics as well. और अगर कोई community आपको पसंद है उसके अंदर channels request करना है, you can also do that. So basically it's just not, it's not limiting you to some projects or some topics. If you can um, communicate with someone, you should, and you can contribute in a lot of other ways, just not just by coding. So yeah. तो सामा आज हम मेरे ख्याल में ये इंट्रो सेशन है, तो हम इसको यहाँ पे अगर रोक लें और फिर फॉलो अप सेशन हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह इन कमिंग वीक्स एंड डेज, राइट? तो आपकी पार्टिंग डिपार्टिंग थॉट्स फॉर द फोक्स जो पे कॉल पे जो इंटरेस्टेड है, कोई एनी एडवाइस फॉर देम, एनी नेक्स्ट स्टेप्स फॉर देम? So I guess if anybody is interested, please let us know maybe in the GitHub discussions as well. और यहाँ पर अगर आपको सेटअप के अंदर आप सेटअप करना चाहते हैं और आप सेटअप कर रहे हैं उसके अंदर भी कोई इश्यूज आते हैं, so our team will help right away within the GitHub as well. That's it. किसी का कोई क्वेश्चन हो बिफोर वी से गुड बाय फॉर टुडे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये गिटहब की तरह है, लाइक इसमें कोड वगैरह अपलोड होते हैं या कैसे, मतलब मुझे इसका फर्क समझ में नहीं आया गिटहब से कैसे इसका डिफरेंट। जी बिल्कुल ठीक है। मैं स्क्रीन ज़रा दोबारा शेयर करता हूँ। लेट्स जस्ट क्लियर द डाउट्स। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक अनदर गिटहब। स्पार्क प्रोजेक्ट जो है, दिस इज़ कम्युनिटी बेस्ड कनेक्शंस। तो यहाँ पर बेसिकली आप गिटहब के अंदर जहाँ पर कम्युनिटीज़ के अंदर पार्ट कर रहे हैं, दैट यू विल कंट्रीब्यूट राइट विद इन द कोड। लेकिन वो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी डेवलपमेंट टीम्स के लिए हैं। इंडस्ट्री कैन नॉट कोलैबोरेट ऑन योर पीयर्स विद इन द गिटहब। तो गिटहब के अंदर कोई कोड देख के आपको शायद ये ना बता सके कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट और उसको आपने कहाँ पर या किस तरह हेल्प लेनी है यहाँ से। सो दिस प्लेटफॉर्म हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री जो कि एक्चुअली में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके इस प्लेटफॉर्म पर आए। सो दिस विल बी एक्चुअल प्रॉब्लम डिफाइनिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पर किसी न किसी प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर आपको कोलैबोरेट करना होगा बेस्ड ऑन योर स्किल्स और इंटरेस्ट, यू कैन एक्चुअली ज्वाइन द कम्युनिटी। और उस कम्युनिटी के अंदर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, यू कैन एक्चुअली रिक्वेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द कम्युनिटी।
और उस समय थोड़ा समय यहाँ पे बस समरी में बता देता हूँ बैक। आई थिंक पहले भी शायद हमने इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है। स्पार्क जो है वो जो आपके FIPs हैं उनको करने के लिए कोलैबोरेशन का टूल है। GitHub नहीं है। GitHub is different thing. GitHub is to collaboratively code something, work on coding problems. तो हम GitHub नहीं बना रहे। हमने जो टूल बनाया है Spark, उसका कोड GitHub में पड़ा हुआ है, and we are asking all of you to come to GitHub and help us enhance the features of Spark. तो आप के साथ मैं इस कॉल के बाद जो है लिंक शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ वो डेमो भी देखें, इस वाली वीडियो को दोबारा देखें, और हमारे जो स्पार्क प्लेटफॉर्म की जो रोड मैप है, जो फीचर्स हैं, उनको पढ़ेंगे ना तो आपको वो डेमो और उससे आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है गिटहब से। गिटहब में कोड पड़ा हुआ है हमारा, और वहाँ पे हम आपको सबको सब्सिक्वेंट सेशंस में ट्रेन करेंगे कि उसमें आके कैसे आप इन्हांस कर सकते हैं फीचर्स और बग को फिक्स कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। दैट मेक सेंस? यस सर। चलो, तो किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप द कॉल टुडे? चलो, थैंक यू सो मच उसामा। और फोक्स इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड, बहुत सारी और सेशंस इस पे हो रहे होंगे आइंदा दिनों में, आइंदा हफ्तों में, जिसमें हम आपको हैंड होल्ड करके गिटहब में लेके जाएंगे, जहाँ पे हमारा स्पार्क प्लेटफॉर्म का कोड पड़ा हुआ है, और वहाँ पे हम आपको दिखाएंगे इश्यूज फिक्स करके लाइव कि कैसे आप जो है आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं, और कैसे आप सेटअप कर सकते हैं। सेटअप की गाइड जो है वो भी एक वीडियो बना के हम शेयर करेंगे, ताकि आप अपने लोकल प्लेटफॉर्म पे, लोकल मशीन पे स्पार्क को डाउनलोड करके उसको उसके साथ यू कैन प्ले विद इट and then start helping us by fixing some issues that we will be sharing on the GitHub. So with that, Usama, thank you so much. Inshallah, we'll come back to this group very soon. Okay, Assalamu alaikum. Thank you, sir. Allah Take Hafiz. care. Walaikum salam wa rahmatullah.